you about whatever they wanted to speak to you. Let me start with the lecture. Okay, so sharing the screen with you, all of you. Is everybody able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, so I'm very first of all disappointed with the attendance right now because again the same thing. Microprocessor architecture similar to digital electronics is a quite linked up topic. Okay, one after the another it has to go. हाँ यहाँ पे मे बी थोड़ा उसका प्रोसेस जो है वो linked up नहीं रहेगा because I may not do certain things in order because unit one पूरा theory है and then from unit two the programming actual programming starts. So theory I will do the way I want it to be done. That is to achieve a certain flow, I will be doing it in a particular way. Okay. And then unit 2, 3, 4 will go in sequence. Again, unit 5 is theory. So unit 1 and unit 5 is completely theoretical. Unit 2, 3, 4, they are programming based units. Okay. So let's just browse the syllabus for microprocessor architecture. The base of microprocessor architecture is digital electronics only. Okay. So unit 1 comprises of basically to understand what microprocessors are. Along with that, we also try to learn that how microcomputers evaluated from microprocessors, and then what do you mean by assembly language programming? Okay, because what programming right now you are done or you have already performed in semester 1, that is C programming is a high level of programming language. This semester you're going to perform C++, oops, which is also another high level of programming languages. So whether it is C, C++, Java, script and all these are high level programming languages. But then how did the whole story start about? Basically, how did the programming concept start about is knowing microprocessor because it all started with microprocessor programming and then slowly it got built up and we came to the high level programming language right now what we are currently using in. So, so that is the unit 1 will comprise of 3 chapters, small chapters individually in it. First is microprocessor microcomputer assembly language. Second is microprocessor architecture. We'll be learning the architectural diagram that the microprocessor will consist of what all things inside it, and we need to know that basic operations, how they are performed, how read operation or write operation is being performed in the microprocessor. And then third is again microprocessor architecture and memory interface, that how the memory element is interface, means linked up with the microprocessor system. Microprocessor system is your microprocessor IC, and that IC number is 8085. That IC number is 8085, which is a 40 pin IC. So how that 40 pin IC is linked up with the memory interface. Memory means memory अलग से होता है माइक्रोप्रोसेसर में, यहाँ पे बिल्डअप नहीं है इनसाइड में. तो वो मेमोरी कैसे लिंक होता है माइक्रोप्रोसेसर्स के साथ. यहाँ पे अभी वही कॉन्सेप्ट होने वाला है. जहाँ पे मेमोरी का बात आएगा वहां पे बिट स्टोरेज होंगे, बाइनरी बिट स्टोर होंगे, और जहां जहां पे बाइनरी बिट स्टोर होंगे वहां वहां पे फ्लिप फ्लॉप्स आएंगे. बट अभी हमें उसके अंदर नहीं जाना है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्लिप फ्लॉप इज अ 1 बिट मेमोरी सेल which is used to store either a binary 0 or binary 1, because in microprocessor the whole data is stored in terms of binary language. Inside the memory it is stored in terms of binary language. It is a binary data. Okay. But when we access it, we access that particular programming concept, we access it in terms of hexadecimal. Okay. So that's about unit 1. It is whole theoretical.
Then starting with unit 2, again interfacing IO devices. This is a theoretical concept which we need to understand. Unit 2 first chapter. Second chapter starts with the programming. So second chapter mein first we will learn all programming concepts, that how do we write basic assembly language program, how do we execute the program, and then how do we write the assembly language programs, and overview of the instruction set. That is, instruction set will possess of what all things, which all operations. Third chapter of it will be the instruction set itself. Okay, instruction set itself. This instruction set is subdivided into 5 branches. Okay, 5 type of operations are being performed over here. First is data transfer operations, second is arithmetic operations, third is logical operation, fourth is branching operation, and fifth is machine control operation. So we will be learning all those instruction set. Totally it is having 72 instructions in it. So we need to know all of them. Then unit 3 mein we will be learning the programming techniques. Yani ki how can we create a looping structure to repeat a particular logic n number of times. Just like how you have used for loops or do while loops in C and C++. Same way exactly, to repeat a particular logic n number of times. How do we create looping structures? Because this is going to be quite interesting and completely different from what we are performed in C और C++. C और C++ पे कैसा है कि तुम्हारे पास एक रेडीमेड सिंटैक्स है फॉर लूप का या डू व्हाइल लूप का या व्हाइल लूप का, जो वो एक पर्टिकुलर लॉजिकल प्रोसेस एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा. बट यहाँ पे कुछ भी रेडीमेड नहीं है. यहाँ पे तुम्हें वर्चुअली लॉजिकली क्रिएट करना पड़ता है एक लूपिंग स्ट्रक्चर, सो दैट अ पर्टिकुलर process is getting repeated n number of times. So it becomes quite interesting to understand. थोड़ा twisty भी रहेगा. तो इसके लिए we have to attend every single lecture of microprocessor because it is completely new thing. I will tell you. बट अगर ये समझ जाओगे तो हाई लेवल लैंग्वेजेस समझने में काफी आसानी होगा. Then in that also we will learn about logic operations, that how using logical instructions we can have different various types of operations being performed. Second chapter of it, of unit 3 is counter and time delays. हम लोग देखेंगे कि how by using the programming concept we can create time delays in circuit, which will allow us to explore more logical concepts of 8085. Unit 4 is stack and subroutine. Stack is the extra memory space what is given by the microprocessors to us, and subroutines are nothing but small programs written outside main block, which are called in your main block whenever required. Huh? Now, what I said right now, who is doing that particular operation in C? Means we have a small program written. My question I will repeat again. We have a small program written, that is the main function block. Let's say void main in curly braces. In that we define a block which logic or whose logic we write outside the main block, and it is called in the main block whenever required. Who does that? Who does that? Functions. Yes, ma'am. हाँ, तो क्या मीन्स आज क्या सुबह सुबह उठ के ऐसे ही अटेंड कर रहे हो तुम लोग लेक्चर्स? कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह सब किया नहीं है क्या? No, ma'am. नहीं मैम. नहीं किया है ब्रेकफास्ट? अच्छा, नहीं. ठीक है. हाँ, वेरी गुड. सो फंक्शंस आर द स्मॉल प्रोग्राम्स. सी में याद है ना फंक्शंस सब लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद है. हाँ. So functions are the small program which are written outside the main block of C++ or C, and they are called in the main block whenever required. तो वो जो function जो काम करता है C या C++ पे या फिर high level programming में, that same operation is performed by subroutines.
तो जो सी में हम फंक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं या फंक्शन बोलते हैं, वो 8085 में सब रूटीन हो जाता है. सब रूटीन इज अ स्मॉल प्रोग्राम विच विल बी रिटन आउटसाइड द मेन ब्लॉक ऑफ 8085 प्रोग्राम एंड इट विल बी कॉल्ड इन आवर मेन ब्लॉक whenever required. देन ये खत्म हो जाएगा. यूनिट 4 चैप्टर 1 में खत्म हो जाएगा अपना पूरा इंस्ट्रक्शन सेट एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ 885. फिर सेकेंड चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएंगे प्रोग्राम्स. अभी ये जब यूनिट 2 and 3 परफॉर्म हो रहा है तो वो ऑपरेशंस के साथ प्रोग्राम्स भी शुरू हो जाएंगे इन बिटवीन. ओके. देन यूनिट 4 सेकेंड चैप्टर इज कोड कन्वर्जन, बीसीडी, अरिथमेटिक एंड 16-bit operations. So we will be learning bigger programs on a wider scale. These are all enlarged programs. And unit 5 is about software development system. That how we develop a software development system or how we can access this 885 kit programming on assemblers. By using assemblers, how we can access it on the PCs or personal computer. Because ये programming concept, what do you say? It has been performed. The programs are performed on 8085 microprocessor kit, which I will show you. Just wait. मैम अभी भी वही वाले किट पे परफॉर्म होते हैं या अभी कोई और उसका वर्जन आया है? वही वाला. You are a CS student. नो मैम आईटी. IT, हाँ, बट 885 का किट है उस पे ही अभी भी परफॉर्म होता है. डायनल ऑफ कंपनी का या मेनी कंपनीज इट इज अवेलेबल, तो उस पे ही परफॉर्म होता है. ओके मैम. Just a minute, I'm showing it to all of you. Some may not be knowing what it is exactly. So this is the kit, how it looks like. Microprocessor kit. This is the keyboard area. Everybody can see. यस मैम. This is the keyboard area and this is the display area. बस इतना ही डिस्प्ले आता है. डिस्प्ले पे सिर्फ हेक्साडेसिमल नंबर्स दिखाई देते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता है. तो अभी तो ऑफलाइन अगर प्रैक्टिकल शुरू होते हैं, ओके, तो मैं ये करवा पाऊंगी कॉलेज में. अगर नहीं होते हैं तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका सिमुलेटर अवेलेबल है, मींस मोबाइल में भी अवेलेबल है एंड पीसी में भी है. हाउ डू वी एक्सेस दैट सिमुलेटर? आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू साइमल्टेनियसली सो दैट वी कैन लास्ट मिनट तक मुझे रुकना नहीं है. इसका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है तो मुझे इसका प्रैक्टिकल भी जल्दी शुरू करना है. सो इमीडिएटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. ऐसा तो आज का में तो पूरा लेक्चर मेरा बेसिक्स ही रहेगा. एक्चुअली कल से ही शुरू होगा, बट ये जो मैं बेसिक्स आज बताऊंगी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू योर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू. यू शुड नो देम प्रॉपर्ली. सो दैट्स द 885 किट. तो ये 885 जो हम लोग किट पे परफॉर्म करेंगे ना प्रोग्रामिंग, ये अगर किट अवेलेबल नहीं है देन सेम प्रोग्रामिंग कैन बी अचीव्ड ऑन अ पीसी और अ लैपटॉप बाय यूजिंग अ असेंबलर. तो वो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे. दैट वी विल लर्न इन यूनिट 5. Also unit 5 we will learn about interrupts. Okay, interrupts क्या है मैं बताऊंगी तुम्हें. जैसे कि interrupt basically it is a most required thing in any डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस. जैसे कि तुम्हारा पीसी भी है, लैपटॉप भी है या फिर एंड्रॉइड फोन भी है, उसमें भी इंटरप्ट है. जैसे कि मान लो सपोज से ऑन अ फोन यू आर अटेंडिंग नाउ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर लेक्चर. हाँ, इन बिटवीन तुम्हें कुछ पबजी या माइनक्राफ्ट का याद आ गया तो तुम लोग क्या करोगे? मुझे मिनिमाइज करके रखोगे मेरा वाला स्क्रीन, लेक्चर ऑन रहेगा और माइनक्राफ्ट या पबजी ऑन हो जाएगा और उधर तुम वो शुरू कर दोगे गेम. बराबर है? यस और नो? नहीं मैम. हाँ, देन सम पीपल को याद आएगा, अरे मुझे इंस्टा पे किसी ने कुछ तो नया स्टोरी डाला है तो मुझे वो देखना है. फिर और किसी को लगेगा, अरे स्नैपचैट पे मेरा ये मैसेज आया है तो मुझे वो देखना है. तो व्हाट यू डू इन दैट केस, यू मिनिमाइज द एक्चुअल स्क्रीन. मेरा स्क्रीन मिनिमाइज हो जाता है और तुम्हारे बाकी सब एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं, राइट?
I'm not telling you this sarcastically. I'm giving you actually the example. Okay, because I don't talk nonsense. Even if I want to talk nonsense, I will talk it related to the subject. So, so what you're doing, you're interrupting the main program. What was your main program? Main program was attending microprocessor architecture lecture. So you're interrupting that and you're opening up another application. So that's why interrupt becomes most important application, and which we need to understand properly that how they are initiated. Did you get my point, all of you? Yes, ma'am. एग्जाम्पल भी तुम लोग को अच्छा लगा रहेगा और समझा भी रहेगा ना. हेलो मैम. समझे. हाँ हेलो मैम. हाँ कविता बोलो. मैम. हाँ Actually, यस I'm बोलो. so हाँ actually, ma'am, we are from Nirmiti Kendra. हाँ यस So, यस यस. हाँ yes, सुधा ma'am. We मैम, want I told you can continue. Yes, I will stop. yes. We won't take much time. We will take only You 5 minutes. Yeah. want to like you want Yeah. Yes, me ma'am. to We make you want the to share. presenter? Yes. Yes. Ma'am. Just a minute. Please make Christopher. Christopher is here with us. Christopher. Okay, Yes. okay. I will make him the presenter. 2 minutes. Thank you, ma'am. Yeah. I have made Christopher Babu Matthew the presenter. Yash, if you want me you to make the presenter, I can make that also. No, ma'am. It's okay. Okay, thank you. You can continue. I will mute myself. Students, please listen to Christo- what they are saying. Hello, I hope I'm audible and the screen is visible. Yes, 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 yes. Okay, thank you. So good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, students. We are here on behalf of Nirmiti Kendra. We just want to take a few minutes of your time so to explain something, and we'll leave after that. Okay. So thank you for this opportunity, first of all. So we are here to talk about Nirmiti Kendra. My name is Christopher. I am the creatives co-head, and we have today with us Yash Hajare, who is the secretary, and we have a few people from PR team also. We are here to talk about Initio. Basically, I'll get to what is Initio in some time. Before that, what Nirmiti Kendra is. Nirmiti Kendra is the entrepreneurship cell and the skill hub of the college that is established and is funded under the Rashtriya Uchchata Shiksha Abhiyan, uh, and it was digitally launched by the Honorable Prime Minister on February 3rd, 2019. Our college, SIS College, has been one of the luckiest and one of the 66 colleges across the country which receives a grant directly under the scheme. So what this scheme is about, if you have an idea for a business or a startup or for an app and you want to make it do it on a proper level. So Nimiti Kendra is the platform where you can change that dream, that idea into an actual reality. Okay, and we provide you all of the necessary equipment, necessary contacts, and even funding if required to help you establish that dream. Okay, that's what Nimiti Kendra basically is. But we are not here to talk about Nirmiti Kendra. We are here to talk about Initio. Okay, Initio is it's an event that we are conducting on the 28th. Okay, it's a business boot camp. So what is a business boot camp? It will be an intense 1 day event which will include seminars, webinars, presentations by previous SIA students who have done projects and are successfully running a business, and will also include talks by prominent industry specialists and yeah, experts, and you will also have a chance to present your ideas in front of a panel of judges where you can receive feedback, you can receive uh, ideas on how you can improve it, and if your idea is good, you will also stand a chance to win seed funding. That is the initial funding for to start up that project. So what will happen? Yes, basically all that. How it will happen? It will be happening online, and why attend? Because one,
if you have an idea, this is a place to start. If you don't know how to go about it, NK is all about that. We help you to realize your path in reaching that place. And even if you don't have an idea, there's nothing wrong in knowing how exactly things work. Suppose you have an idea for an app or a business 2 years down the line, you don't have to search for anything, you don't have to research anything, on the spot. You already know all of this stuff. So knowledge doesn't harm, it doesn't hurt. So yeah, it's a good place to know about all of this stuff, especially since startup is one of the biggest contributor to economy. It's a rising contributor in this present age. And you will also be getting a e-certificate for joining. You showcase your idea, you connect with industry experts, and you stand a chance for seed funding. You can do it either on a solo basis, that is singular, or you can have a group, have a team, and you can still join it. And that is what Initio is all about. It's a place where you learn how to create an app, no, how to market your app to start into a business. So that is all about it from our side. You can follow our Instagram page Nimiti Kendra _SIS for more details, or if you have any doubts and queries, you can text us there, or you can also call on the numbers given on the screen. Yash Hajare, who is our secretary for this year, and Chirag Kotari, the joint secretary for this year. Uh, Thank you everyone for listening, for being so patient with us. Thank you, ma'am, for giving us this opportunity. I would like to end by asking if you have any queries, any doubts, or anything of the sort. How do we register for this? Who do we register it with? Yes, good question, ma'am. We'll send you the link. We'll send it to the HOD, and she'll be forwarding it to your class, to your groups. Alternatively, you can also go to our Instagram page. The link is there in the bio. Okay, thank you. Anything else? Also, I would like to suggest something to the students. Actually, I guess this is a FY class, I guess, FY IT. Yes, this is And FY and I, BSc IT SEM 2. yes, yes. And I actually listened to your lecture, ma'am. So it's quite interesting. You were teaching about 8085 and the 8086. So it's actually quite good processors and all. So I would recommend you guys, students, to use your theory knowledge to make into a practical working project. So I mean, you have Raspberry Pi lying down in your department, or you have sensors and all, and you have application knowledge. So you can create a innovative applications. What you just need to do, you just need to find a problem. See what all problems we are facing in our day-to-day life, and you just have to create a solution for it. So I hope कि आप जरा कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज लाओगे यहाँ पे. And with that said, we won't take much time. That's it. Thank you, ma'am. Thank you again, once again, everyone, for being so patient. Thank you, ma'am, for the opportunity. We'd like to Yes, take a thank you, leave Yash now. and Christopher. Have a great day, everyone. Thank you. Students, may I continue? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So that was interrupts. Moving on, the last topic of this particular unit 5 is introduction to recent microprocessors. So whatever currently microprocessors we are using, like the current generation is a 10th generation going on. So accordingly, we learn the core processors, means not exactly the whole thing of it. How whatever extra microprocessors will be learning that this is uh, the comparison of the physical and the actual practical based features, how these microprocessors are different than 8085. That we will be learning. So that comparison, we are going to see that how these microprocessors get upgraded with memory
and with the programming skills and how faster they are compared to 885. So वो comparison आएगा, features आएंगे. So that is what we are going to basically learn over here. Is the syllabus overview clear to all of you? So it's a long way to go. Students? हाँ मैम चलेगा. Yes, ma'am. Okay. So today only basics. So please listen to what I'm saying. So अभी first of all, so what is 885? So 885, it is basically a IC number. जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में AND गेट IC number is 7408. OR gate IC number is 7432. NOT gate IC number is 7404. NAND IC number is 7400. NOR IC number is 7402. XOR IC number is 7486. So these are the major 8 ICs what we actually use in digital electronics. Okay, so these IC numbers are, and one more is left out, XNOR. XNOR IC number is 7426. Okay, so these all we generally use. Now, what are these ICs? Because we should have an overview of it, because first of all, we are dealing with whole 885 IC only. So these ICs are just like, I will show you. So this is your IC 7408. And such kind of boards are available, or they are made. So these boards are made by us in college. So they are made in the college. Like if you want to see clear view of it, see, this is a clear view of it. So this, the small black thing in the center, you can see is the IC. Is everybody able to see this? Yes, ma'am. So this is Yes, AND ma'am. gate IC. Same way we have NOR gate IC. अभी दिखने में ये सब एक जैसे दिखते हैं, तो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो ब्लैक कलर का केस है ना, इसके स्ट्रक्चर पे, फ्रंट स्ट्रक्चर पे नंबर्स एम्बोडेड होते हैं. तो जो तुम ऐसा एक 45 डिग्रीज एंगल में लाइट के हिसाब से रखोगे तो वो रिफ्लेक्ट होंगे 45 डिग्री या 50 डिग्री. अगर वैसे नहीं दिखाई दे रहा, किसी किसी को इश्यू हो सकता है, मुझे तो अभी दिखते ही नहीं है, मेरा नंबर के वजह से, चश्मे के नंबर के वजह से. बट देन जनरली व्हाट यू डू इज यू पुट अप सम चॉक पाउडर ऑन इट. चॉक पाउडर डाल के तुम ऐसा उसको क्लीन कर दोगे तो वो चॉक पाउडर
कैच कर लेता है वो एम्बोसिंग जो है नंबर का, एंड हमें वो नंबर दिखाई देता है. सो दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई दीज गेट्स. ओके, तो ये गेट्स होते हैं. और ये जो ब्लू वाला बोर्ड दिखाई दे रहा है, apparatus दिखाई दे रहा है, वो बाइनरी बिट जनरेटर है जो बाइनरी डिजिट्स जनरेट करता है वंस एंड जीरोस फॉर्म में. इसे पावर स्विच बॉक्स कहते हैं. तो ये जो डिजिट्स होते हैं, when this switch is on, when this particular switch is on, it will give you binary 1, means basically plus 5 volt, and when this switch is off, it will give you 0 volt, means binary 0. तो जैसे मैं एक ये परफॉर्मिंग बता रही तुम्हें ताकि तुम्हें समझ में आए एक्सपेरिमेंट. जैसे एंड गेट, ये चेक कैसे करते हैं अभी गेट. अभी एंड गेट में क्या है, एंड गेट का क्या लॉजिक है कि whenever both the inputs are high, output is high. that is definition of AND gate. तुम लोग ने सब प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या डेफिनेशन मुझे दी है, मीन्स मैं थोड़ा शॉक में चली गई थी कि मैंने इतना बकवास पढ़ाया क्या. So when A and B is high, output is high. When any one of the input is low, output is low. That is definition of AND gate. So let's verify this gate by practically using the concept. तो ये power switch box है. So this is your AND gate. अभी AND gate IC में जैसे यहाँ पे हमने देखा AND gate IC, this is AND gate IC. ये AND gate IC में ये पिन कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1 to 7 and 8 to 14. इट गोज इन अ सीक्वेंस. तो ये नॉच है. नॉच का लेफ्ट हैंड साइड से पिन नंबर 1 काउंट होना शुरू हो जाता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो ये एक AND गेट हो गया, फर्स्ट AND गेट. 1 2 is input to the AND gate, 3 is output symbolically. 4 5 is input to second AND gate, 6 is output, 7 is ground of the IC, 9 10 is input to third AND gate, 8 is output, 12 13 is input to fourth AND gate, 11 is output, 14 is VCC. You are understanding all of you what I am saying? Yes, ma'am. This I was supposed to actually tell you. Who is crying? No one, ma'am. हाँ Ma'am, in my background, my nephew was crying. हाँ ओके ओके. मुझे लगा कि ये कोई तो अभी रो रहा है कि ये मैम हमें कौन से जमाने में लेके गई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें क्यों कर रही है, इसके लिए किसी को रोना आ रहा है sarcastically. This is what I thought. Okay, anyway. So this is first. तो फर्स्ट एंड गेट में 1 2 इनपुट हो जाएगा, 3 आउटपुट हो जाएगा. तो हम एक एंड गेट को वेरीफाई करेंगे. मैं जस्ट वेरिफिकेशन दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी पीपीटी ओपन कर ही दिया है तो मैं बता देती हूँ. So this is 7408 AND gate. We will take two inputs, यानी कि two binary inputs from the power switch box. So first input will go to pin number 1 using this banana wires. These are called as banana wires. They are clips. So easy हो जाता है connection के लिए. Second input will go to pin number 2. Output जो है we give it to LED terminal over here. So here you will be able to see a LED terminal. This LED terminal is internally connected from inside to this LED terminal. तो यहाँ पे जब भी आउटपुट हाई है तो वो हाई आउटपुट यानी कि बाइनरी 1 इज गिवन टू एलईडी. हाई आउटपुट का वोल्टेज वैल्यू होता है 5 वोल्ट्स. नाउ एलईडी को ऑन करने के लिए 2 वोल्ट्स इज इनफ. एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड. हाँ, तो अगर तुमने उसको 2 वोल्ट्स का सप्लाई दे दिया तो एलईडी ऑन हो जाता है. तो अगर यहाँ पे बाइनरी आउटपुट 5 वोल्ट्स आ रहा है देन दैट इज गिवन टू एलईडी, देन एलईडी विल बी ऑन. अगर यहाँ पे आउटपुट 0 आ रहा है कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के लिए तो 0 वोल्ट विल नॉट मेक द एलईडी ऑन एंड हेंस एलईडी विल बी ऑफ. तो जब भी एलईडी ऑन होगा दैट मींस माय आउटपुट टू द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इज 1 and whenever LED is off that means my output for the given combinations of input is low. So that is how we are going to verify. So we switch it on. Then we make VCC connection. VCC given to VCC of the board because it has to energize it, and ground and negative of this power switch box is shorted, means combined together, and that is together given to ground of the IC board 7408. ठीक है. मैम VCC क्या होता है? VCC is
पावर सप्लाई स्विच होता है जो सप्लाई करेगा, एनर्जाइज करेगा आईसी को ऑन करने के लिए। हाँ, मिनिमम 5 वोल्ट रिक्वायर्ड है। अभी मिनिमम 5 वोल्ट क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज अपना जो बाइनरी 1 है उसका ही वैल्यू 5 वोल्ट है। यस मैम। इसके लिए उसको एनर्जाइज करने के लिए, जैसे कि अभी तुमने टीवी को ऑन किया, हाँ, तो पहले तुम क्या करते हो? टीवी को प्रोसेस ऑन करने के लिए प्रोसीजर क्या है? तुम टीवी का स्विच ऑन करोगे, तो टीवी का स्विच ऑन होते ही जो रेड लाइट है वो ऑन हो जाता है। दैट मीन्स द टीवी सर्किट इज नाउ एनर्जाइज्ड विद द सप्लाई। तो सर्किट एनर्जाइज हो गया है। कोई भी डिवाइस को पहले शुरू करने के पहले उसको एनर्जी देना चाहिए ना। जैसे कि अभी तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है करके तुम सुन नहीं पा रहे हो मेरा बात बराबर से, फोकस नहीं हो पा रहा है। तो अगर Yes. ब्रेकफास्ट करते थे तो तुम्हारे पास एनर्जी होता तो तुम मुझे बराबर से सुनते थे। हाँ, तो वैसे ही सो ओवर हियर टीवी को ऑन करते ही वी एनर्जाइज इट। फिर रिमोट कंट्रोल जैसे हम ऑन करेंगे तो टीवी का जो डिवाइस है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड इट स्विचेस ऑन। देन यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर चैनल टू ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर चैनल और व्हाटएवर यू वांट टू सी। बराबर है मैं क्या बोल रही हूँ? तो वैसे ही यहाँ पे जब भी तुम वीसीसी अप्लाई कर रहे हो आईसी को, तो आईसी एनर्जाइज हो रहा है। अभी एनर्जाइज हो रहा है उसका मतलब नहीं है कि वो तुम्हें जो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स या आउटपुट्स चाहिए वो देगा। एनर्जाइज का मतलब है वो सर्किट सिर्फ ऑन हो गया है। नाउ यू विल अप्लाई इनपुट्स अकॉर्डिंग टू विच यू विल गेट द आउटपुट। सो हियर सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स अप्लाइड इज 0 0, क्योंकि हमने यहाँ पे स्विच ऑन नहीं किया है। बाइनरी स्विचेस में वो ऑफ कंडीशन में है, तो यहाँ पे एलईडी ऑन नहीं हो रहा है, एलईडी ऑफ है, उसका मतलब है आउटपुट इज 0। सो फॉर ए 0 बी 0 आउटपुट इज 0। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट। तो हम आउटपुट लिखते हैं लॉजिकल ए 0 बी 0 आउटपुट 0। नेक्स्ट में मैं बी ऑन करती हूँ, तो ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो एलईडी होता है वो ऑन हो जाता है, बट ये जो आउटपुट है वो ऑन नहीं हो रहा है। यू कैन सी यहाँ पे ऑन ऑफ ही है। तो ए 0 बी 1 आउटपुट इज 0। नेक्स्ट में ए इज 1 एंड बी इज 0, आउटपुट इज स्टिल 0। एंड थर्ड में हम दोनों ऑन करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाता है। यू कैन सी ओवर हियर एलईडी ऑन हो जाता है, मींस आउटपुट इज हाई इन दैट केस। So this proves the AND logic. When A and B is high, output is high. Did you understand what I'm trying to say? यस मैम। जस्ट ये चीज मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था करके मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि तुम्हें पता होना चाहिए आईसी क्या है। तो इस तरह से काफी सारे आईसीज होते हैं। तो जैसे ये आईसी नंबर्स हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट टाइम मींस हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाए इसका लाइव परफॉर्मेंस, तो वरना तुमने जो प्रैक्टिकल किया ना वो 60% पार्ट था एक्सपेरिमेंट का, जो तुमने एक्चुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में परफॉर्म किया दैट वाज ओनली 60% पार्ट। वो जो तुम लॉजिकल डायग्राम क्रिएट करते हो ना वो तुम्हें कनेक्ट करना पड़ता है एक्चुअली सर्किट में, और फिर प्रूव करना पड़ता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के लिए आउटपुट 0 आया, ये कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 1 आया, मींस दैट इज द ट्रुथ टेबल यू आर सपोज्ड टू वेरीफाई। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग ना? यस मैम। So these all ICs are basically digitized circuit। उसमें से ये जो सारे ICs है ना ये 14 पिन के ICs होते हैं। तो ये IC का ऐसा स्ट्रक्चर होता है 14 पिन वाला। तो हाफ ऑन वन साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये सीक्वेंस में हमेशा ऐसे ही जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। So notch and a rounded circle. You start from the left hand side of it. राउंडेड सर्कल कभी नहीं रहेगा, तो नॉच के लेफ्ट हैंड साइड से पिन नंबर 1 होगा हमेशा, और वो यही सीक्वेंस में जाएगा कोई भी आईसी के लिए, हाउएवर पिन नंबर इट मे बी हैविंग। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. वैसे ही आईसी अभी 80 85 पे जाते हैं हम। अभी इसमें क्या है,
सीधे प्रैक्टिकली हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स परफॉर्म नहीं कर पाए, तो जहां जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगा कि वो प्रैक्टिकल तुम्हें बताना चाहिए, वहां वहां पे मैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, ताकि यू विल बी एबल टू को रिलेट इट. Now IC 8085 is a microprocessor IC which is a 40 pin IC. जैसे ये 14 पिन आईसी था, वैसे ये 40 पिन आईसी है, तो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है, बट इट बिकम स्लाइटली बिगर. Size is also slightly bigger compared to the regular ICs what are seen and observed in digital electronics. That is the logic gates, these are basic logic gates, and these all are derived gates. Okay, तो यहाँ पे ये होगा पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. हाँ, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. So it goes in the same sequence. Basic logic वही है जाने का. Did you understand, all of you? So later on we will see that how these pin diagram हमें पता होना चाहिए by heart. Every pin number represents what, वो हमें पता होना चाहिए, उसका functions पता होना चाहिए. So these all details we are going to learn ahead. So did you understand what is IC standing for and what is a IC? IC stands for integrated circuit. Yes, ma'am. IC stands for integrated circuit. तो जैसे ये मैंने बेसिक में एक छोटा आईसी ले रही हूँ, IC 7408 ले रही हूँ मान लो, या फिर 7400 नैंड गेट आईसी ले रही हूँ. हाँ, तो ये नैंड गेट आईसी कुछ इस तरह से आया. ठीक है, मैं बेसिकली तुम्हें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी में हम कैसे हैं. ठीक है, तो ये नैंड गेट में ये फर्स्ट नैंड गेट, सेकेंड नैंड गेट, दिस इज ग्राउंड, थर्ड नैंड गेट, फोर्थ नैंड गेट, वीसीसी. ठीक है, तो ये जो एक नैंड गेट है ना, इसमें क्या है अभी, ए बी आउटपुट, ए डॉट बी बार, राइट. दिस इज सिंगल नैंड गेट, राइट. तो ये जो एक नैंड गेट है ना, उसके अंदर क्या होता है मैं बताती हूँ तुम्हें अभी. उसके अंदर कुछ इस तरह का सर्किट होता है. जस्ट अ मोमेंट. ये जो मैं निकाल रही हूँ ये क्या है पता है, ये ट्रांजिस्टर्स है. ठीक है, ये ट्रांजिस्टर Q1, Q2, Q3, Q4, ये डायोड, फिर ये रेजिस्टर्स, लेट्स से R1, R2, R3, R4, ऐसा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारे एक्चुअली दो एमीटर्स जा रहे हैं वो इनपुट्स है तुम्हारे A B टू द NAND गेट, एंड हियर वी गेट द आउटपुट.
Why? तो बेसिकली ये एक ब्लॉक के अंदर ये वाला सर्किट होता है. कौन से ब्लॉक के अंदर? दिस. Did you understand what I'm trying to say? Yes, ma'am. अभी ट्रांजिस्टर डायोड्स किसी ने पढ़े होंगे 12th फिजिक्स में, जिन्होंने साइंस लिया है. जिन्होंने नहीं लिया था साइंस, वो सिर्फ समझ लो कि वो कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स है, वो इनपुट के हिसाब से तुम्हें एक्टिवेट होके आउटपुट देंगे. कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है. तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज कि इतना सा आईसी में, इतना छोटा था वो आईसी, मैंने अभी तुम्हें दिखाया ना परफॉर्म करते समय, बिकॉज दैट एक्सपेरिमेंट हु वाज परफॉर्मिंग वाज मी ओनली ओवर देयर इन द वीडियो. सो वो छोटा सा आईसी था 14 पिन का. तो उसमें इतना 4 गेट्स है, एक गेट में 4 ट्रांजिस्टर्स है, एक डायोड्स है, 4 रजिस्टर्स है. तो ये इतना सा मिनिएचर सर्किट उसमें आया है ना. That means we are in nanotechnology only, na? Did you get my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So वैसे ही when we discuss about 40 pin IC 8085, there will be so many things inside this. So basically this is your CPU, Central Processing Unit. जैसे हमारा अभी CPU रहता है PC का या लैपटॉप का, वैसे ही 8085 माइक्रोप्रोसेसर का ये जो IC है 40 pin IC, this is your central processing unit. This is the central processing unit of the whole microprocessor. ठीक है? Is the concept of IC basically clear to everyone? What do you mean by IC and क्या होता है exactly? Yes, ma'am. Moving ahead. Now, microprocessors, if you talk about, will process binary data. Means to the microprocessors, you give binary data to be processed, and you will get these are inputs, and output what you get is also binary data. So abhi what all thing it is going to process? It can transfer data. Transfer data as in what? Transferred from one memory location to another, or it can perform arithmetic operations. तो arithmetic operations में क्या आएगा? Arithmetic operations में आएगा addition and subtraction. अभी subtraction जो है वो भी direct method of subtraction से नहीं होता है. Subtraction होता है 2's complement method of subtraction. अभी you all know ना what is 2's complement method of subtraction? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ. So 2's complement method of subtraction. So basically इसमें हमें सिर्फ एक एडर का ही जरूरत है, जो एडर प्लेन एडिशन करेगा एंड विल आल्सो परफॉर्म 2's complement मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, जिसमें भी एडिशन ही रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट वी परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन. माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस. तो विच आर लॉजिकल ऑपरेशन? इट विल बी परफॉर्मिंग एंड लॉजिक, यानी कि एंड गेट तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और लॉजिक, नॉट लॉजिक, एक्सॉर लॉजिक. ये चार ही लॉजिकल ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है, एंड और नॉट एंड एक्सॉर. उसके साथ साथ इट कैन परफॉर्म रोटेट ऑपरेशन, डेटा को रोटेट करना, एंड परफॉर्म कंपेयर ऑपरेशन, मीन्स टू कंपेयर टू डेटा. जैसे एक हमने एक 2 बिट कंपैरेटर देखा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, which was comparing 2 bits, which bit is greater than other or less than other or equivalent to other, like that comparison method. Okay, so these 6 logical operations are being performed: and operation, or operation, not operation, XOR, rotate and compare.
Other than that, it can perform branching operations, means to create looping structures, and few machine control also. Means how do we control the machine? Control the machine यानी कि जैसे अभी कंप्यूटर हैंग हो गया तो तुम कभी कभी उसको डायरेक्टली स्विच ऑफ कर देते हो, या फिर जैसा मोबाइल अपना हैंग हो जाता है तो हम उसको रीस्टार्ट कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो पूरा सिस्टम के ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो तुम्हारा मेन स्विच बटन का रहता है। तो वैसे ही देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस थ्रू व्हिच यू कैन कंट्रोल द होल सिस्टम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सो वो सारे ऑपरेशंस, तो ये जो ऑपरेशंस है यही हम देखेंगे कि they become the main operations of your instruction set. So accordingly, the instruction set of microprocessor will be subdivided as 5 categories: data transfer operations, arithmetic operations, logical operations, branching operations, and machine control operations. तो यही हम प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे। Up till here, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी जंक्शन में कोई भी डाउट है कि तुम्हें लगा कि बाबा ये मैम जो बोल रही है अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी का अभी पूछो। एंड आई बेट ऑन दिस, आई एम टेलिंग यू, इफ यू डू नॉट अटेंड एमपीए लेक्चर, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक था ना कि तुमने एंड में कैसे तो कर दिया मैनेज, माइक्रो प्रोसेसर नहीं हो पाएगा। मैं कोई गूगल पे सर्च करके पेपर नहीं बनाती हूँ। मैं I create my own questions and I put it. It takes me almost a day or a two to make a paper. 14-15 hours जाता है उसमें। तो तुम उसके हिसाब से ही पढ़ना, तुम गूगल पे डिपेंड मत रहना कि मैं ये गूगल पे डालूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। इट इज अ कम्प्लीटली प्रोग्रामिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी मैं वैसे ही पूछूंगी। So see to it that you're attending proper lectures. यहाँ पे practicals भी proper होने वाला है microprocessors का, because we have a simulator available on which we can perform the practicals. So please do not take things lightly and attend lectures regularly. Now, most important thing is binary data जो है, हम इतना सारा binary data याद नहीं रख सकते because it is very difficult to remember combination of zeros and one. Maximum हमने क्या याद रखा? Binary combinations of 0 to 9 और A to F हेक्साडेसिमल में। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारा डेटा को बाइनरी में सिर्फ याद रखने के लिए। सो फॉर यूजर यानी कि वी हु आर वर्किंग ऑन द माइक्रोप्रोसेसर किट यानी कि आईसी 8085, उस पे हम जो काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ बाइनरी डेटा एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। सो व्हाट वी डू इज वी एक्सेस दिस बाइनरी डेटा इन फॉर्म ऑफ हेक्स। That means user will enter the data into the system in hex, hexadecimal numbers. We will be using hex number. That's why जब भी तुमने वो कीबोर्ड देखा, मैं कीबोर्ड दिखा रही हूँ तुम्हें वापस एक बार। ये कीबोर्ड देखो, Yes, ma'am. टू मिनट्स। Everybody is able to see now?
Yes, ma'am. So here you can see the numbers are in all hex numbers are there. 16 hex numbers are there. 0. Look at the layer. Look at the cursor. Yellow color cursor. Mouse. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. That means we are entering the data in form of hex. डिस्प्ले पे भी हेक्स ही दिखाई देगा. तुम डेटा को पूरी तरह से हेक्स में ही प्रोसेस करोगे और आंसर जो हमें दिखाई देगा वो भी हेक्स फॉर्मेट में ही रहेगा. तो यूजर जो है यानी कि वी हु आर प्रोसेसिंग द डेटा ऑन द माइक्रोप्रोसेसर किट, वी विल बी एक्सेसिंग द डेटा वाया hex numbers only. Means we should understand hexadecimal numbers properly. So all instructions also, जैसे कि अभी तुम C++ में डायरेक्टली तुम कोड एंटर कर सकते हो. हाँ 2 minutes. C++ में डायरेक्टली यू कैन एंटर कोड. जैसे कि अगर तुम्हें कोई भी प्रोग्राम करना है C++ में, यू कैन इजिली एंटर दैट पर्टिकुलर कोड. ये तो कोई तो प्रोग्राम है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम है. So this is some program. So you just directly type the particular code and you are able to see the output of it, right? Yes. तो यहाँ पे ये सारे यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस है. जैसे कि बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग का प्रोग्राम ले लो तुम लोग. हाँ ये मुझे अभी रन करना है. So you have to enter 10 numbers to be sorted in ascending order. वो मैंने पहले कलर डाल दिया था. A, unsorted data and sorted data. So program comes in ascending order. So this is a different output screen for it. So ये काफी sorted है. ये जो programming language है C++ या C, it is quite sorted. Okay, it is easy to access also. But ये सारी चीजें माइक्रोप्रोसेसर में नहीं है. माइक्रोप्रोसेसर में क्या है? 2 minutes. I am showing you that. तो जो सॉफ्टवेयर में हम करने वाले हैं वो मैं बता रही हूँ तुम्हें. मैम वो तो एक ये है सिमुलेटर है ना. हाँ तो स्टिमुलेटर है. तो पीसी पे कैसे एक्सेस करते हैं? मोबाइल पे भी अवेलेबल है 885 स्टिमुलेटर करके. तो तुम उसे डाउनलोड करके फिर हम हमारा प्रैक्टिकल उसी पे करेंगे. तो मैं अभी बता रही हूँ ओवरव्यू, आज पूरा ओवरव्यू कि एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं. बिकॉज मैं थ्योरी कभी कभी शुरू कर देती हूँ और बच्चे सोचते रहते कि मैं कर क्या रही हूँ. क्योंकि मैं 885 में थोड़ा ऐसा टेढ़ा जाती हूँ. मेरा रास्ता सीधा नहीं है. जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्लो था पूरा 1 2 3 4 5 कट 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 कट, वैसे मैं नहीं. मैं 885 में मैं अपने तरीके से ही पढ़ाती हूँ. बिकॉज अगर मैं पूरा थियोरी पढ़ाने जाऊंगी तो तुम लोग पूरा कंफ्यूज होगे. सो आई विल नॉट डू दैट. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक.
So first I will make you learn through programming point of view, and then I will complete the theory topic. So I have a completely different way of teaching that MPA subject. That's why. So ये stimulator है. एक्चुअल स्टिमुलेटर भी बताऊंगी, बट यही हम लोग काफी टाइम यूज करेंगे बिकॉज वो बेटर है. तो ऐसा, तो किट हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 885. बिकॉज सेम किट मोबाइल पे और उस पे यूज होना चाहिए, बट एक्चुअली मैं जो यूज करती हूँ ना वो अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगी कभी. इसको क्या हो गया, 2 minutes. माय लैपटॉप इज बिकमिंग स्लो. किट चूज करेंगे. किट काफी सारे अवेलेबल है माइक्रो प्रोसेसर के. हम जो यूज करते हैं वो है डायनालॉग डायना 85. सो आई चूज दैट. हाँ, तो अभी ये फ्रेंड डिस्प्ले दिखाई दे रहा है. हाँ, फ्रेंड इसका रीसेट पोजीशन है. तो फ्रेंड कितने कैरेक्टर्स है? हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर दे आर 6 कैरेक्टर्स. तो एक्चुअली क्या होता है, ये 6 कैरेक्टर्स में से जो 4 कैरेक्टर्स है, फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स, दे आर एड्रेस फील्ड. एड्रेस यानी कि क्या, मेमोरी का एड्रेस. और जो नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स है एन एंड डी, दे आर डेटा फील्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर एड्रेस में क्या डेटा स्टोर्ड है वो. तो जैसे अभी मैं कुछ एड्रेस सिलेक्ट करती हूँ, मैं प्रेस करती हूँ रीसेट, सेट, ये सब डिटेल में बताऊंगी मैं, तुम स्ट्रेस मत लेना ये सब चीज का. F1. एक्सक्यूज मी मैम. बोलो. मैम 11:30 को ओएस की मैम ने लेक्चर शेड्यूल किया है. हाँ, मैं जस्ट छोड़ती हूँ नोटिफिकेशन अभी. है. हाँ हाँ, ओके ओके. ओके, छोड़ती हूँ. तो F100 मेमोरी एड्रेस मैंने सिलेक्ट किया. अभी उसका मुझे डेटा देखना है कि वो क्या स्टोर्ड है. हाँ, तो क्या स्टोर्ड है, 76. अगर मैं इंक्रीमेंट करती हूँ तो AC. बेसिकली मुझे क्या बताना है कि तुम जो भी एक्सेस करने वाले हो वो तुम पूरी तरह से हेक्स में एक्सेस करने वाले हो. डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ? So whatever data you enter is in the form of hex. Whatever output you will get will be in the form of hex. Is that clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. So इसीलिए यहाँ पे 2 minutes. That's why over here user will enter the data in the form of hex. Huh? Hex will get converted to binary by the microprocessor. Binary data will get processed by the CPU of IC 885. Output is produced in the form of binary only. Again, microprocessor converts that binary back to hex to be displayed on the display. तो ये वाया कीबोर्ड एंटर होता है और जो आउटपुट दिखता है वो डिस्प्ले पे दिखाई देता है, बट बोथ इन द फॉर्म ऑफ एक्स. इज इट क्लियर अप टिल हियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा. ओके, सो दैट्स फॉर टुडे. स्टिल मेरा अभी ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर जाएगा कल का, और अगला भी जाएगा मेरा बेसिक्स में ही. मैं बेसिक्स खत्म करके ही मैं यूनिट 1 शुरू करूंगी. बेसिक्स प्लीज मिस आउट मत करना, तो, क्योंकि अगर मैंने यूनिट 1 शुरू कर दिया तो देयर विल बी मेनी लूप होल्स ओवर देयर. यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स.